जो भी DAW तुम यूज़ कर रहे हो उसको तुम जितना जानोगे उतना उतना फास्ट होगा तुम्हारा काम और उतना ही अच्छा होगा। सो बेसिक थिंग्स टू लर्न इन अ DAW इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गोना शो यू दिस इज़ अ चैनल रैक, ठीक है? यहाँ हम क्या करते हैं, this is I'm using FL Studio. Different DAWs have different names. I'm not sure about it, but ये सेक्शन में हम लोग VSTs लोड करते हैं और ड्रम सैम्पल्स लोड करते हैं, सैम्पल्स लोड करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा. दिस इज द चैनल रैक where you compose stuff. ठीक है? Then I'll take you to the mixer channel, I mean the mixer rack. तो ये हो गया तुम्हारा मिक्सर रैक जहाँ पे तुम हर इंस्ट्रूमेंट को राउट करोगे, प्लेस करोगे एंड देन दिस इज वेयर यू मिक्स यू नो द ट्रैक. और फिर हम लोग का हो गया ब्राउज़र सेक्शन जो यहाँ पे है. ये यहाँ पे तुम्हारा ड्रम सैम्पल्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे. So these are something that you need to know about a DAW when you're starting producing, like you know this is the playlist section. ये हो गया तुम्हारा अरेंजमेंट के लिए. यहाँ पे like easily लिखा भी हुआ है कि आजकल DAWs are trying to make it easy for you. तो अरेंजमेंट के लिए ये एरिया अरेंजमेंट के लिए हम लोग उन लोगों ने बनाया है. तो क्या होता है कि इंडिविजुअल ट्रैक्स, ड्रम्स, वोकल्स एक्सेट्रा सब डाल के यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं. So once I'm done with the like balancing out the beat section of the track, I would start with the vocals, and I'll start with the lead vocals first. Let me show you how I worked on this certain project. So I have this project loaded up. It's a R&B track, but like this concept applies on rap track as well. So I have the lead loaded up on all the mixer tracks over here. So what I do on this certain track is you know, once I play the beat and the vocals together, first I'll listen to it. So I'll just bring it. So I'm listening to it and the whole faders are already leveled out right now. But at the start, of course, you'd pull the levels up and down to see, you know, where it sounds proper. It sits on the mix well. It sounds with the levels are sitting well, exactly. So once I level it out, so this is my lead vocals. So I would just load up a EQ at the start and see. As you can see this section, I'm just cutting out the bad frequency, which you can see over here, and boosting out what I feel like needs on his vocals. Like on this end of it, I'm boosting around 130 hertz, which is just a little bit of the low end and a little bit of the high end as well. So on the lead vocals, I'm just adding an EQ and some compressions as well. Let me just load up. Okay, so over here I have a compressor and some just analog what do I say, EQ as well. So as you can see, there's a little bit of compression happening and some saturation just to bring some warmth on the track. And yeah, so like I showed you in the first place how I compress, it's just the same way I'm compressing everything together. Sometimes we may just lose a little bit of like some important like sounds may get a little bit softer, like you know, some words can be softer by doing all sort of things like that. So why I added a compressor at the end is just to make sure key again is well proper balance. At the end of the day, balance is the most important thing in a track. So yeah, this is how I work on the vocals. So like I showed you what I did to basically bring more clarity into the vocal. That's just not it, that's just the main part of it. But to bring more to make enhance the vocal a little bit,
you just can't just like do the corrections and the compressions as well. So what I do next would be adding effects on that vocal chain. So what are the like the most important thing that I always add on vocals are three things. That's the reverb, the delay, and sometimes I add a chorus effect or a flanger effect. But these three things are like the go-to चीज़ें हैं जो मैं हमेशा हर vocal chain पे use करता हूँ. As I went on to explain about cleaning up the vocals and bringing more clarity into it. After that, I would just go to the effects section of the vocals. And when I talk about effects, I'm talking about adding reverb and delay and some other kinds of effects like chorus effect or flanger effect, etc., etc. So on this particular vocals, I'm gonna show you ki I have already like thought in my mind ki I'm gonna add reverb to it. So that's normal to add reverb anyway. That's something that every engineer would do. So on this track, I have a reverb loaded up. So I'm gonna make it on default right now. So I'm gonna reset it and yeah. So I have a reverb loaded up right now, and so as I'm showing like how I go on to mix reverbs onto the track is I just bring the volume up to normal level, and I just as you can see I just loaded up a preset. I loaded up a preset over here, pop vocal hall sorry, and yeah. So यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं सुनूंगा. So it's just like going and seeing कि ये कैसा sound कर रहा है actually, how it's sounding in the overall mix of the track. So ऐसे सुनता हूँ मैं first, उसके बाद अगर मेरे को अच्छा लगा doesn't mean कि मैं instantly उसको वो कर दूँगा, फिर overall context के साथ भी सुनूंगा. So So at this point I'm liking how the reverb sounds with the whole track. तो मैं क्या करूँगा अभी, इतना loud reverb तो मैं रखने वाला नहीं हूँ क्योंकि I don't want it to be so wet overall पे. तो मैं गाने को play करूँगा and context के हिसाब से उसको volume उसको adjust करूँगा. So I'm just gain staging right now. So it sounds perfect to me at this level, which is at 38%. या इससे भी थोड़ा कम कर सकता हूँ. So yeah, it's just like going back and forth and listening to it कि कैसा sound कर रहा है overall track के साथ. So मैं pause भी करूँगा, फिर डालूँगा. So I'll just see the difference of it कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना खराब लग रहा है. So right now I'm liking it, and at this certain level I'm finding it to be perfect with the overall beat as well. So मैं just थोड़ा बहुत इधर उधर adjust करूँगा if I go back and forth कि ठीक है थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए. So yeah, so that's how I add the reverb. फिर उसके बाद मैं आऊँगा delay पे just to give more width or just to have more bounce on the vocals as well कि बाद में like certain places में it doesn't sounds like dead, like if a vocalist has like left a certain space empty तो उस चीज़ों पे जब हम लोग delay डालते हैं तो क्या होता है कि it fills that space कि जहाँ पे empty है कहीं पे vocals like थोड़ा ब्रेक लिया है वोकलिस्ट ने इस एरिया पे, तो थोड़ा सा डिले डालने से क्या हो जाता है कि इट एड्स दैट इफेक्ट ऑफ एको और समथिंग लाइक दैट एंड इट साउंड्स अमेजिंग ऑन ट्रैक. सो इसीलिए मैं डिले डालता हूँ सो दैट ट्रैक के जो छोटे छोटे स्पेसेस है उसको फिल अप करने के लिए. तो मैं इस लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रैक मैंने स्लेट का डिले डाला है एंड या
सो इस पे भी मैंने प्रीसेट लोड किया है एम्बिएंट लीड वोकल का। तो यहाँ पे ये है, तो मैंने इसको लोड करने के बाद आई लिसन टू इट लाइक हाउ आई डिड, आई लिसन टू इट द सेम वे, मतलब जैसे मैंने रिवर्ब सुना है, तो इसको भी मैं फुल एकदम लाउड कर दूंगा। So as you can see, like it's playing a little bit echoed out, और थोड़ा सा time difference दिख रहा है उसमें। तो as I can listen, I know that ये अच्छा लगेगा। So what I do is, इतना loud लगेंगे तो of course it's going to sound very disturbing to the listener as well. So after adding the the preset, or after doing the delay or something, the main thing is again gain staging. So वही balance के बारे में जो मैंने बताया था कि balance is so important. So gain staging करेंगे उस same delay को, और फिर so now it's adding, it's coming in the back. Of course it's so subtle that you cannot listen to it, but overall it's just adding that feels to the track. So that's what I do with the delay as well. And in certain cases like this, I would add some modulations as well. So इसमें मैंने वही flanger डाला है, flanger डाल के same चीज़ क्या है जो मैंने basically full out करके सुनता हूँ, and then after that I just speak some like presets, or just modify the presets, and then slowly I just do the volume fader leveling stuff, and then overall सुन के then I decide कि yes, this is sounding great. So then I decide to move on with the track. When I'm doing this mix, and when I'm like perfectly like I have balanced out the track of once I've balanced out the whole track, मेरे को ये देखना है कि how is it sounding overall. तो अभी फ़िलहाल मैं जैसे प्ले कर रहा हूँ, so let me show you कि इधर क्या हो रहा है बेसिकली। तो मैंने सबको एक सब बस में राउट किया है, जो ये है सब बस लिखा हुआ है। सो अभी ये फ़िलहाल फुल मेलोडीज हो, ड्रम्स हो और वोकल्स हो, सबको एक इंडिविजुअल चैनल पे राउट किया है। तो इधर मैं क्या करूँगा, अभी मास्टर के लिए रेडी करूँगा ये ट्रैक को। तो मास्टर के लिए मैं तब रेडी करता हूँ जब मेरे को लगता है कि द मिक्स इज साउंडिंग परफेक्ट, और ये तभी करना चाहिए जब तुमको लगे कि you have the whole track balanced out properly, and you have a good every sound is sitting well. So अब इस सिचुएशन में मेरे को लग रहा है कि like I'm feeling कि okay, this sounds great and I think I should push this for the master. तो मैं मास्टर पे ये करने की कोशिश करता हूँ कि I just keep it around -6 to 9 dB. तो मिक्स क्या होता है कि when we mix to a certain level की headroom दे के मिक्स करते हैं। तो headroom इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग जब मास्टरिंग लेवल पे जा रहे we have to make it loud. बट अगर तुम headrooms नहीं दोगे मिक्स पे, तो मास्टर जब करेंगे तो what will happen is कि क्लिपिंग हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है वहाँ पे। So that overall मतलब वो खराब साउंड करेगा, if he's distorting, clipping, etc. तो once you have like rendered out the whole mix, then it goes to the mastering stage. The mastering stage is the final stage of the track. Mastering is enhancing the track, enhancing the overall levels of the track. Mix करते वक्त headroom छोड़ के हम लोग mix करते हैं, तो वो headroom को कंपेंसेट करने के लिए हम लोग मास्टरिंग करते हैं। तो मास्टरिंग क्या होता है कि मास्टरिंग जब हम लोग करते हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि द लेवल्स आर साउंडिंग क्लोज टू एवरी हिप हॉप कमर्शियल ट्रैक्स। अभी मैं कमर्शियल ट्रैक्स बोल रहा हूँ हिप हॉप के बारे में, बिकॉज आई एम अ हिप हॉप प्रोड्यूसर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हिप हॉप राइट नाउ। सो हिप हॉप ट्रैक्स में कंपेयर करके मैं मास्टर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि when every listener is listening to a track on the pub or club or कहीं etc imaginable जगह तुम सोच लो, so ये क्या होता है कि he is playing a track and then your track comes next, ठीक है, और तुम्हारे ट्रैक का master level is not good as the commercial tracks,
तो क्या होगा कि लिसनर माइट फाइंड इट लाइक वाइब टूट जा सकता है, और मे बी एट सर्टेन केसेस दे माइट लाइक इट, और ओवरऑल टाइम्स वी वाइब नहीं होता है कि अरे इतना सॉफ्ट है ये पार्ट. सो उस लेवल पे लाने के लिए हम लोग मास्टर करते हैं. If you feel like you went to check the mix, the master on the car or something, and your sound is not good, then go back to the mix and fix the mix, and then again send it for mastering. That's the simple explanation about mastering. So in short, I'll just say ki mastering matlab is just enhancing your track and compensating with the volume that you lost during mixing, something that you did for headroom, you left out space for headrooms, etc., etc. So simply just reaching out the same levels with other commercial tracks is what we call mastering.